morning, everybody. Today we have to deal with the credit creation by commercial banks. Dear friend, as we discussed in our previous classes, entire banking system in our country divided between two groups, central bank and commercial bank. We already discussed the meaning and function of the central bank in the previous class. So today we have to deal with the most important function performed by our commercial banks. What is the most important function of commercial bank? It is the credit creation by the banks. Dear friend, our banks are also the agents to money supply in the economy. As we discussed in the chapter of money, there are two types of money: high-powered money and credit money, bank money and fiat money and fiduciary money, hard money and soft money. So, the main supplier of money is RBI. She is authorized to issue all the currency. But our banks takes the basis of that currency. Bank purchase the cash issued by RBI, and after the possession of that cash, she can create the credit. So, on the basis of cash issued by RBI or central bank, our commercial bank can create money or credit into the market. If we wish to understand the process of credit creation, see what the process of credit creation by banks. Perhaps we discussed in the introductory class, our commercial banks are profit-making institutions. These are the business enterprises which have to do the work for income or profit. The first function performed by these banks to accept, what it accepts, the surplus cash of the people as deposit. The first important function performed by our bank, this bank accept the surplus cash, the cash over and above the requirement of common people. If common people observe there is surplus cash with them, they have to deposit it into the bank, and bank accept or receive the surplus cash of the people as a deposit. That deposit, it is called primary deposit. What it called? It is called primary deposit. Whatever the deposit is received by commercial bank from the public, known as primary deposit. See, what the objective to accept the deposit? The objective of accepting or receiving the surplus cash from the public, only the next function to advance credit to the needy people. It may common people harm. People harm. Dear student,
advance, the credit advances by the bank is much more greater than the deposit accepted by the bank. Why? It lends, means here bank lends multiple time more credit than their deposits. Why is it so? हमारी बैंक जितनी कैश डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करती है उसका मल्टीपल टाइम, मेनी टाइम she can lend the credit. Means what the reason behind she can manipulate much more credit to the people against their nominal deposits. So a particular agenda, you may say the open secret agenda of the bank. समझने की जरूरत है द ओपन सीक्रेट एजेंडा ऑफ द बैंक। अगर एक इंडिविजुअल बैंक से लोन रिसीव करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, इफ यू विश टू गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक, सी द परसेप्शन ऑफ कॉमन पीपल एंड बैंक। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो बैंक में टू गेट अ क्रेडिट अ लोन, आप अपने आप को ट्रीट करते हो एज ए बोरोवर फ्रॉम द बैंक, बट एट द सेम टाइम बैंक ट्रीटेड अस एज ए डिपोजिटर। दिस इज द प्राइमरी डिपोजिट or the derived or secondary deposit. What it is? It is derived or secondary deposit. Means whenever one reaches to bank to get the credit or loan, no bank in our market to lend the money into the cash to the public. बैंक कभी भी हमें कैश नहीं देती है। क्या देती? बैंक्स lend the money to the people by entering the cash into their respective accounts. बैंक क्या करते हैं, जब आप लोन लेने के लिए जाओगे तो बैंक कैश देने के बजाय आपके अकाउंट में कैश की एंट्री शो करेगी, एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी और डिराइव्ड deposits by commercial bank. अब क्या हुआ, जब हम बैंक में लोन के लिए पेपर प्रोड्यूस किए, बैंक ने हमसे एक अकाउंट अपने ब्रांच में ओपन किया और ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर she deposited the cash by entering the cash into the account. एक आदमी ने लोन लिया तो
लोन के लिए बैंक ने उससे कहा कि आप मेरे ब्रांच में अकाउंट ओपन कीजिए, और जैसे ही उसने अकाउंट ओपन की, लोन का अमाउंट उसके अकाउंट में एंट्री कर दी। And for the use of again the primary as well as secondary deposits bank issue the check to the account holders. See the process. What are the next? When one processes the paper to get credit from the bank empty the cash into the account of that person, and to withdraw the cash and to use the cash in the market, she issue a check against the primary as well as secondary. Here, demand deposit equal primary deposit plus secondary there are two types of deposits. Primary and secondary both constitute the demand deposit. Means whatever the demand created by the people by depositing their cash into the bank through the primary as well as secondary. Primary में अकाउंट होल्डर ने खुद अपना कैश डिपॉजिट किया है, और सेकेंडरी में उसने लोन बोरो किया and against the on behalf of the borrower, bank deposited the cash into the account. So, dear student, the ratio between deposit and credit, or the credit created by bank is many times more of the deposit received by the bank. How? As I can see from the experience, there is two words. Dear student, अगर क्लास 6 टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो स्टेटमेंट होगी फ्रॉम द एक्सपीरियंस बैंक नो दैट ऑल द डिपॉजिटर्स cannot come to the bank to withdraw their entire cash at the single working day. There is two type of statement. Must remember that. एक स्टेटमेंट होगी जो टेक्स्ट बुक में दी गई होगी कि बैंक अपने एक्सपीरियंस से जानती है, या जानती है कि उसके सारे डिपॉजिटर एक ही दिन में सारी अमाउंट विड्रॉ करने नहीं आएंगे। अगर एक स्टेटमेंट है कि फ्रॉम द एक्सपीरियंस शी नोज दैट ऑल द अकाउंट होल्डर्स do not come to the branch of the bank to withdraw their entire deposited money or demand deposit. So, what the second statement? In our country, the regulatory body RBI fixed the proportion of their deposit at the legal reserve, and every banking institution in our country are legally bound to follow whatever the legal reserve fixed by the RBI. So there are two statements. One statement
is from the experience. Banks knows. पहला स्टेटमेंट है कि अपने एक्सपीरियंस से बैंक को पता है कि सारे अकाउंट होल्डर एक दिन में हमारे पास नहीं आ गया। क्या है? आप मेंशन कर सकते हो फ्रॉम द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। Banks know that all the depositor will not come up to the bank to withdraw their entire deposit। अगर उसे पता है कि सब लोग एक साथ सारा कैश डिपॉजिट विड्रॉ करने नहीं आए तो क्या करती है? सो बैंक्स के banks keep only a small fraction of deposited cash with themselves for the purpose of day to day transaction। See the experience, what experience tell us। एक तो बैंक को एक्सपीरियंस है कि सारे डिपोजिटर एक साथ नहीं आएंगे और विड्रॉ करने, और दूसरा एक ये भी एक्सपीरियंस है कि कुछ अकाउंट होल्डर रेगुलर डिपोजिट करने आएंगे। तो बैंक को कितना कैश चाहिए? सी नो फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस इज sufficient to the bank। Due to that, whatever the cash keep with the banks required to day-to-day transaction, always maintain in the vault cash by the bank। After that, all the remaining cash by the bank can be lent to the people to generate income or profit। So, अगर बैंक को पता है कि उसके सारे डिपॉजिटर एक साथ नहीं आएंगे, तो अगर एक साथ नहीं आएंगे, से the bank demand deposit, sorry, demand deposits equal primary plus secondary deposits। Call the bank again the demand deposit। But like now everyone is familiar regarding different types of cars। Again the demand deposit, what is the concept? 24 into 365 day बैंकिंग सर्विसेज। हमारी बैंक ने प्रॉमिस कर दी है अगेन द डिमांड डिपॉजिट, व्हाट 24 into 365 days banking services। Whenever, wherever, whatever you wish to
withdraw, you can withdraw because the डिपॉजिट की डिमांड डिपॉजिट की नेचर, डिमांड डिपॉजिट की नेचर है। तो जब चाहो जहां चाहो जिस फ्रैक्शन में चाहो यू कैन यूटिलाइज इट। सो अगेन द डिमांड डिपॉजिट बैंक क्या करते टू मेंटेन 24/6 सर्विसेज। बैंक इशू चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, व्हाटएवर इट इज, वीजा कार्ड, all are available with us to withdraw and use our deposited cash into the bank whenever, wherever, whatever we require or we wish to have. So, dear student, see from the observation of your experience, आप देखोगे कि बैंक अपनी डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट कैश देने की बाध्यता नहीं रखती। उसने एटीएम कार्ड और चेकबुक आपको इशू कर दी है और थ्रू द कार्ड और चेकबुक यू कैन डू योर बिजनेस स्मूथली इन द मार्केट। अगर आपके पास एसबीआई का एटीएम है तो जरूरी नहीं कि आप एसबीआई के एटीएम में ही कैश विड्रॉ कर दें। द फैसिलिटी 24/365 डेज, तो पूरी इंटायर इकोनॉमी में आप जहां चाहते हो उसकी बैंकिंग सर्विसेज को यूज कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, फ्रॉम दिस प्रोसेस bank doesn't require to give the cash to the depositor. So, in the place of cash, banks creating the credit through the other alternatives, checks, cards, etc. Let us understand the process of credit creation with an example. Dear friend, we can understand it through the example. Suppose, example, let us suppose, let there is a single bank in the economy. कंफ्यूजन नहीं होना कि सिंगल बैंक कैसे होगी, आज के डेट में बहुत सारे बैंक हैं, बट वी अडॉप्टेड अ कोर बैंकिंग सिस्टम। अंडर द कोर बैंकिंग सिस्टम यू कैन क्रिएट ऑल द बैंक इन अ सिंगल बैंक। कोर बैंकिंग क्या बताती है कि आप एक बैंक के अकाउंट से ट्रांजेक्शन दूसरे बैंक के अकाउंट से भी कर सकते हो। सो सेकेंड, द फर्स्ट एग्जाम्पल is, for our example, first assumption is there is a single bank, and second, all the transaction routed through the banks। दो एजम्पशन हमें लेनी है। पहला एजम्पशन कि ऑल देयर इज सिंगल बैंक, एंड सेकेंड जितनी भी ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज होती है ऑल द रूट ट्रांजैक्शन रूटेड थ्रू द बैंक। एंड वन मोर एजम्पशन की जगह एक आप फिक्सेशन भी मान सकते हो। दिस इज द लीगल रिजर्वेशन। थर्ड LRR आपके बुक में हो सकती है CRR। एक बार 10%। अभी हमने कहा कि बैंक अपनी एक्सपीरियंस से जानती है कि उसको कितना कैश चाहिए। हमने एज्यूम कर लिया कि बैंक को पता है कि उसे 10% कैश चाहिए टू मेंटेन डे टू डे ट्रांजेक्शन। आपको एज्यूम करनी है, क्योंकि हमने वर्ड LRR और CRR यूज किया है, बिकॉज इन आवर कंट्री LRR is fixed by RBI or central bank. There are two variants of LRR we already discussed before, CRR, SLR. In your book CRR, you can use the term LRR, legal reservation.
So see the process of if this is so. We can show it in a tabular form. See the round of deposits, credit and return. That is हमने क्या रखी ARR equal 10%. Again, so for the first round, that is initial deposits. First round means initial deposit. Suppose पहला account holder बैंक में आता है and deposit in rupees. वो कितना deposit करता है? Rupees 1000. What proportion bank required to maintain in the cash? 10% of 1,000 rupees required by bank to maintain in the cash. 1,000 minus 100, 900 rupees credit can be created by a bank. ये 900 कहाँ मिलेगा? Second round, see the secondary deposit or second round, secondary deposit or second round. अब अगर हमारे बैंक को एक सेकेंड कस्टमर मिल चुका है जिसे बोरो करना है, बैंक कितना रेट कर सकती है? ओनली ₹900. सपोज दैट 900 lent by bank to someone as secondary deposit. और वो क्या शो कर रही है? द नेक्स्ट राउंड डिपोजिट, सेकेंड डिपोजिट भी बैंक को मिल चुकी है. एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लीगल बाउंडेशन शी हैव टू मेंटेन 10% of 900, that is 90, and 900 minus 90, 810 rupees available to the bank to lend the credit. Third round, अब बैंक कितना क्रेडिट कर रही है? थर्ड पार्टी को 810 रुपीज. अगेंस्ट 810 रुपीज 81 फिर से कैश रखनी होगी और 81 के गए 729 रुपीज को लेन कर सकते हैं. एंड शो ऑफ ये कब तक चलता है? till the entire 1,000 rupees get by the bank as cash reserve. ये तब तक चलता रहेगा जब तक 1,000 रुपीज जो इनिशियल डिपॉजिट थी एक कैश रिजर्व में कन्वर्ट नहीं हो जाता. आफ्टर कन्वर्टिंग entire initial deposit into the cash reserve, bank may not able to create more credits. So dear student, this is the limitation because the credit creation of the bank depends on two things. Credit creation of the bank. Credit creation depends upon first initial cash or high bound money and LRR or CRR, whatever the two of you instructed. So
credit multiplier here. Credit multiplier denoted by K equal 1 by ARR or CRR, 1 by ARR or 1 by 10% or 1 by 10 into 100 equal 10. K equal 10. So dear student, if credit multiplier K equal 10, our bank can create credit. Credit creation by commercial bank equal initial deposit, or you can say high power money into K. Here initial deposit equal 1000 and the value of K equal 10. So 10,000 cash or credit can be created by the bank. In the 10,000 demand deposits equal primary plus secondary deposits. Total demand deposit 10,000 plus equal primary deposit 1,000 plus secondary deposits. Here secondary or credit equal secondary deposit equal 10,000 minus 1 equal 9,000. So dear student, you can observe and try to understand. So the example, बैंक के पास डिपोजिट आई 1,000 रुपीज थी और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया 10,000 रुपीज को. So on the process, whatever we discussed for credit creation, you may understand how much a bank can create the credit. The credit creation capacity of the banks depends on two things only. One is CRR, LRR, fixed by RBI, or from the autonomous institution, it's fixed by bank on their own from the past experience, and the initial deposit. Higher the LRR or CRR, lower the credit creation, lower the LRR, higher the credit creation. Thanks all. Have a nice day.